जुड़ चुके हैं इस समय। एंड कैसे हैं अंकित सर? बस बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। जैसा कि हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि मिस्टर अंकित जो हैं अभी एज अ गेस्ट स्पीकर हमारे साथ आना चाह रहे थे इस सेशन के अंदर, जिसमें वो एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाह रहे थे। जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में किस तरह से एजुकेशन में वो हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सेशंस लिए हुए हैं इस समय और इंडिया में काफ़ी स्टूडेंट्स को वो गाइड कर चुके हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने यूज़ किया है, उस एक्सपीरियंस को हम चाह रहे थे कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके शेयर करें। और जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर सब एक न्यू इंडियन पॉलिसी लॉन्च हुई है 2020, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं और उस पॉलिसी के बारे में डिटेल्स में मिस्टर अंकित जो है हमको थोड़ा सा गाइड करेंगे किस तरीके से जो पॉलिसी है। जैसे उसमें आपने जनरली पढ़ा होगा कि 5+3+3+4 जो एक पॉलिसी है, उसके अंदर एक टर्म सुना होगा आपने, जो स्ट्रक्चर बनाया है इस समय गवर्नमेंट ने। और बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे उसमें 6 क्लास के बाद से प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा या ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे मिस्टर अंकित से, और उसके बाद हम मिस्टर अंकित की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। तो पहले एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं मिस्टर अंकित से कि किस तरीके से जो करंट एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आए आफ्टर 34 ईयर्स, अगर आप देखेंगे ये चेंजेस आया है। इसके पहले जो 1992 में पॉलिसी आई थी, उसके बाद अभी 34 ईयर्स के बाद चेंजेस आए हैं काफ़ी। तो अब इस तरह को इस 1986 में पॉलिसी बनाई थी, सॉरी, उसके बाद अभी 34 ईयर्स बाद चेंजेस आए। तो किस तरीके से मिस्टर अंकित आप इस एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं? Okay, so thank you first of all giving me an opportunity, Mr. Saurabh, for coming on Yeah, this yeah. live forum on Instagram and Okay. sharing my viewpoints on education and spirituality. So, as you Yeah. know, we already have this national education policy which has been changed after 34 years. In fact, you can Yeah. see the first point which I liked it in the education policy is about the no language barrier. So there will be no language barrier, and students have an opportunity to learn in their regional languages. So agar aap dekhein, I have read out there's almost 100 tribal children who was studying in their schools. Now out of that only 20 was reach out to high schools. So that was a big gap because they was not allowed to educate and learn in their regional languages. So that was a big gap. Okay. So what government has done is government has fulfilled this gap, and now there is no Yeah. language barrier. So you can see the increase in the enrollment ratios. So there was no Yeah, language yeah. barrier now. काफ़ी जैसे Now, बच्चे रहते थे, इनको इश्यूज आता था इंग्लिश वगैरह से, जनरल काफ़ी लोग घबराते हैं इंडिया के अंदर। तो उन्होंने एक पॉलिसी में चेंजेस किया कि जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी, मराठी, तमिल, तो उसमें आप अपना correct. सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अप टू 8th क्लास। 8th क्लास के बाद अगर वो चाहते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश ऑल्सो, नो इशू इन दैट। चलिए Absolutely. कंटिन्यू मिस्टर अंकित। So that's, and the result is you can see in the rural areas there's going to be increase in the enrollment ratio as well. The second point is your government has a barrier between choosing of the major and minor subjects. Now, for example, if a student wants to become a design engineer, he wants to learn the physics as well, plus he wants to learn his creativity. He wants to expand his creativity in the arts as well. So now you have an option that you can learn physics also as a major subject you can choose, and minor you can bring out the creativity in yourself by learning art as well. So that is also Yeah, yeah. a good move, I can say, which will definitely benefit the students in their life. Okay. And the third point is multiple entry and exit option. Now in India, where you can see we about the 40% or 50% of the people coming from the rural background, who are Yeah, in the yeah. middle class family, who have a lot of responsibilities, and because of some reason they were doing their graduation or post graduation program, but in the middle they have to exit, probably because of the responsibilities or because of the financial responsibilities as well. Or so Yeah, now yeah. what happened is, now in this situation you have multiple entry and exit options. So you can start your degree in 1 year or 2 years. If you by mistake, unfortunately, if you will not be able to complete a degree, you can fulfill the degree after 3 or 4 years as well. Yeah, So yeah. that's a good move for the students. Now the Yeah, I vocational was. education as well. Yeah, Please go yeah. ahead, Mr. Saurabh. Yeah. I was also reading an article today in a newspaper. Mr. Modi has said yesterday only
दैट इंडिया में जो अभी एजुकेशन हम सिस्टम लेके आ रहे हैं, इससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें दे वर लुकिंग फॉर द जॉब, मतलब जॉब वो मांगना चाहते थे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि हम जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब क्रिएटर बने, मतलब लोग अभी तक Absolutely. हम जॉब मांगने वाले हो, तो ये चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, तो अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। Okay, now we have a fifth point I want to say is your single regulator. Now, except the medical colleges and legal colleges, every colleges in India will be under the one autonomous education industry ministry. You can say is the higher education ministry. So that is they will be more focusing on the skills and advancement of these skills and training. So that is which is very important. And the sixth point is on the vocational training. Now students also have an opportunity to learn and earn as well. So they will also this will bring out the creativity in the students. So that is also one important point which will help the student to grow in their life. They can start learning the coding lessons, or they want to learn the art, or they want to learn the codes, or they want to go into the physical activities like some games and stuff like that, where they can opt based on the capability. What is their capability? So this is one of the most important point. As the policy is changing, I think the requirement for faculties or teachers are also in demand, because right now the current education जो हमारा उसमें टीचर्स का भी जो रोल था वो शायद चेंज होने वाला, क्योंकि अगर पॉलिसी चेंज होगी तो हमको एक अच्छे टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है। मैंने एक डेटा निकाला था, उसमें 40 लाख टीचर्स इंडिया को अभी और चाहिए, जो न्यू पॉलिसी आने वाली है उसके अंदर 40 लाख टीचरों की और जरूरत है। अभी 1.5 करोड़ टीचर्स इंडिया में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट, और उसके अंदर अगर 40 लाख अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं तो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया जो चाह रही है, जो उनका गोल है कि सुपर पावर बनाने का इंडिया को, तो वो कहीं ना कहीं अचीव होने के चांसेस हैं। Absolutely. तो काफ़ी एंड आपने काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। यू हैव एक्सप्लेन 5 to 6 पॉइंट्स जो अभी हमारे करंट एजुकेशन पॉलिसी के हैं। तो अभी मतलब 50% बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ डन द वर्क। आफ्टर 50% जो है हम इम्प्लीमेंट हो जाएगी अगर पॉलिसी, तब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। अभी तक तो यही हो रहा था कि काफ़ी टाइम से जो है 34 ईयर से सेम एजुकेशन सिस्टम हमारा फॉलो हो रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। कोरोना का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हम बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम में ई लर्निंग आई है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी झुकाव है कि वो ऑनलाइन पे फोकस कर रही है, तभी उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ई लर्निंग के लिए भी रखी हैं। करेक्ट। उसके ऊपर मैं आपका थोड़ा सा व्यू जानना चाहूँगा कि आपका क्या व्यू है सर कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो कितना आपको लगता है कि सक्सेसफुल है इंडिया में, या आगे आने टाइम में अच्छा रहेगा इंडिया के लिए बेनिफिट? So, so one more point I want to include in this national education policy, Saurabh, is digitalization. So government, you can see government has more focus on digitalization. Now they are taking digitalization into rural area as well. So now more students has been getting an opportunity to learn through apps. And this is going to be a new format in the future as well. So now government has to improve the infrastructure in the rural areas. And recently data shows that that more consumption of internet is happening in rural areas. So we have to send them in the right way. So now apps are available in every regional languages. So now government and teachers also have to know how to use those apps and how to use the digitalization in the education as well. So it will be very easier for the students and for the teachers as well to learn through education and through online as well. So now it's going to be a big challenge because schools infrastructure has not been pre-planned in digitalization. They will not be using, most of the teachers doesn't know how to use apps and Zooms or WebEx to calls or meetings. Now these apps of WebEx and Zoom were only allowed in corporates because we were having meetings for international clients. Now every school is using Zoom app or the WebEx app, but in rural areas still we don't have a good infrastructure where these apps are used. So now government is also focusing on digitalization, and every teacher must learn how to use these apps, which will definitely benefit the students. ओके, काफ़ी अच्छे तरीके से अंकित सर ने एक्सप्लेन किए हैं जो पॉलिसी है उसके अंदर। डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया उन्होंने कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन जो आ रहा है उसमें जो फैकल्टीज़ है उनको भी मतलब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का ज़रूरत है कि वो ऐप्स वक्त तो गवर्नमेंट दे रही है लेकिन उनको प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर भी एक
प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट का एक जो प्रोसीजर है उसमें प्रोसेस डेवलप होना चाहिए कि किस तरीके से टीचर्स को भी गाइड करें, क्योंकि टीचर्स को भी पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं पहले उनको खुद ट्रेनिंग लेना होगा, उसके बाद वो लोग आगे Absolutely. जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे Okay. तरीके से हमने यहाँ पे वी हैव कवर्ड द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी आई थिंक, एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशन। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, उसमें हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हमारा ऐसा का सेशन था कि जब हम स्पिरिचुअल टॉक करने वाले थे और एजुकेशन सा उसको किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। और जैसे मिस्टर अंकित जो हैं काफ़ी गेस्ट लेक्चर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उसमें स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, उसमें बताते हैं किस तरीके से जो स्पिरिचुअल हमारे पुराने वेद हैं, जो उपन्यास हैं, उसके अंदर किस तरीके से वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो विष्णु पुराण वगैरह हो गया, उसके अंदर जो वेदास हैं, जो ऋग्वेद सामवेद, उसके बाद उनके जो अलग अलग अवतार हैं, अगर आप बात करें उसके अंदर मत्स्य उनका एक अवतार आया था, उसके बाद नरसिम्हा अवतार आया, उसके बाद कुर्मा अवतार, राम भगवान का अवतार है, कृष्ण भगवान का। तो ये उनके बहुत सारे अवतार हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके डिफरेंट अवतार का इनकारनेशन इसको बोलते हैं, इनकारनेशन बोलते हैं जो अवतार हैं। तो कैसे वो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम स्कूल्स के अंदर, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।